हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज थर्मल रनअवे इन ट्रांजिस्टर्स। सो इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर्स वी नॉर्मली यूज द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड इन दैट केस वी नो दैट IC is equal to beta times IB plus beta plus 1 times ICBO, where ICBO is a reverse saturation current. Now ICBO जो हमारा अकर करता है that is due to the flow of minority charge carriers. एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पूरी तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। सो इफ वी इंक्रीज आर टेम्परेचर, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, ड्यू टू विच आर रिवर्स सैचुरेशन करंट इज गोइंग टू इंक्रीज। एंड बाय दिस इक्वेशन वी कैन से दैट अगर हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो रहा है दैट विल ऑल्सो लीड टू इन द इंक्रीमेंट ऑफ कलेक्टर करंट। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस आर कलेक्टर करंट ऑल्सो इंक्रीजेस. That means our collector current is directly proportional to temperature. Now we have an important point here, that is for every 10 degrees Celsius increase in temperature, हमारा reverse saturation current double हो जाता है. So basically it is a cyclic process. अगर हमारा temperature increase करता है then हमारा reverse saturation current भी increase करेगा, due to which हमारा collector current increase करेगा, because of which there will be a production of heat. एंड हीट इंक्रीज होने की वजह से हमारा टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करेगा. नाउ दिस होल प्रोसेस कंटिन्यूज एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता है. सो व्हाट इज थर्मल रनअवे? द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर इज नोन एज थर्मल रनअवे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेजर्स थ्रू विच वी कैन अवॉइड इट. सो द फर्स्ट वन इज बाय अप्लाइंग नेगेटिव फीडबैक. सो वी हैव सीन इन द केस ऑफ एमिटर बायस कि हम लोग जब कलेक्टर करंट इंक्रीज करते थे वहां पे भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम आ रही थी. So there we used our emitter resistance, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि अगर हम लोग बेस करंट को डिक्रीज कर रहे थे हमारा कलेक्टर करंट भी डिक्रीज हो रहा था. एंड सेकेंडली वी कैन यूज हीट सिंक्स टू अवॉइड दिस थर्मल रनअवे. So that was all for this video and I will see you in the next one.